पाकिस्तान में साइकोलॉजी पढ़ाने का, साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने का जो तजर्बा है ना, वो कुछ अलमियों से दो चार है. Some tragedies are attached to these experiences, and the foremost of it is the lack of clarity on the part of students that what would they do once they graduate. Possibilities or limitations क्या हैं being student of psychology here in Pakistan? Let's talk about them. सबसे बड़ी limitation जो मुझे महसूस होती है और उसकी एक वजह है, एक हफ्ते में दर्जनों applications और CVs हमें House of Wellness में receive होते हैं for the internship. And when we interview these students for the internship, हमें ये पता चलता है कि this is the prerequisite of their degree programs. Fine, but it is so random and ad hoc that institutions जिनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या MOUs होते हैं क्लिनिकल फैसिलिटीज रिहैब्स के साथ, बहुत इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो जाएं और इंटर्नशिप्स करें. अच्छा, अब इंटर्नशिप एक मामला है, बट पूरा एकेडमिक प्रोग्राम 4 साल का इन स्टूडेंट्स के अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वो इनकलकेट ही नहीं करते. इसकी एक मिसाल समझ लीजिए, 130 क्रेडिट आवर तकरीबन 4 सालों में पढ़ाए जाते हैं, कॉन्टैक्ट आवर्स जिसको कहते हैं. फ्यू 100 कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे, बट द क्रेडिट आवर्स आर ओवर 130, जिसमें से तकरीबन 30 to 40 क्रेडिट आवर्स इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स के हैं जो HEC पढ़ाता है, पाक स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज एंड व्हाट नॉट. ओके, दे आर इंपॉर्टेंट, बट वी हैव स्टडीड देम टिल 12th ग्रेड, राइट? सो एक तो ये बात हो गई. दूसरा, जितना बाकी की साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है इंतहाई असेसमेंट ओरिएंटेड है. दैट इज डिजाइंड कि इधर सेमेस्टर शुरू होता है, 5 कोर्सेज हैं, पढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद क्विज़ शुरू हो गए, असाइनमेंट शुरू हो गई, मिड टर्म आ गए, एंड एक डीपर लेवल की जो नॉलेज इम्पार्ट करने की एक पेडागॉजिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ना होने के बराबर है. आस्क स्टूडेंट्स, they study one course of, let's say, positive psychology. At the end of the course, when they appear in the paper and they even pass it, how much knowledge, basic fundamental knowledge, I'm not talking about specialized knowledge, do they have about positive psychology? If they're given a 5 minutes space, talk space, where they need to tell us about the concept, any fundamental concept of positive psychology, like subjective well-being and objective well-being, and the difference between the two and their relevance with the happiness, concept of happiness, will they be able to elaborate it? Right? If somebody will be able to elaborate it, believe me, it will be because of his or her own personal prowess and interest and additional reading, not that one course in the which he or she studied in the classroom. Right? So that is one missing link. The other missing link is how different domains and specializations, subdomains of psychology are introduced at our universities, and who introduce them and who teach them. A phenomenal craze is found for studying clinical psychology. You ask students, why do you want to be a clinical psychologist? The why part is not clear. I like being a clinical psychologist. Okay, fine, ji, badi acceptable reason. Liking is actually a good enough reason. But who is going to teach you clinical psychology in your universities? And clinical psychologists are academic psychologists who have studied clinical psychology, have done some thesis on an area of health psychology, mental health. That is not clinical psychology. If a teacher at university level teaching BS and MS is not having at least 20 to 30 hours of therapy in a month, I don't think he or she is supposed to be capable of teaching clinical skills in the classroom in the specialization of clinical psychology, right? If you go for visiting psychologist or visiting faculty, I hardly know कि कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी बहुत रिवॉर्डिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस को छोड़ के बहुत पैशनेटली आके एकेडमिक्स में पढ़ाना चाहेगा. ये डायलेमा है, राइट? हमें ये रियलाइज़ करना है. ओके, फाइन. What about other domains of psychology?
organizational psychology, forensic psychology, educational psychology, psychometrics and assessments, child psychology. जब ये पढ़ाने की बात आती है तो स्टूडेंट्स रिलक्टेंट होते हैं और फिर एक सवाल जरूर पूछते हैं जिसके बाद की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी. एंड आई आस्क another question in response to this question: what are the employment opportunities of clinical psychologists? अभी आप मरहम पे जाइए और साइकोलॉजिस्ट लिखिए, पता नहीं 5,000 या 7,000 साइकोलॉजिस्ट एनरोल्ड होंगे जो 500 रुपए से लेके तो पता नहीं कितने पैसों तक का पर सेशन देने के लिए तैयार है. डिमांड, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड seemingly. How are they being trained to establish themselves as a clinical psychologist? The marketability of clinical psychology, their positioning, वो कौन पढ़ाएगा या सिखाएगा इन academic corridors में. फिर आइए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या का स्कोप फॉर इंस्टेंस. एंड आई आस्क्ड देम, हैव यू एवर थॉट ऑफ बीइंग एन एचआर एग्जीक्यूटिव इन ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पाकिस्तान, जो पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, being in the HR department of Coke, P&G, Unilever, or Colgate Palmolive, or Reckitt Benckiser, and they say, but they are for MBAs. Okay, for which MBAs? MBA major in HR, human resource. What about masters in human behavior, masters in human psychology, versus masters in business administration, majoring in HR? What sounds more intriguing? To me, the first one. Being masters of human behavior, a bachelor of human behavior. Are you able to put up your employability case in front of an interview panel? Competing with an MBA HR from Barry University, Concert, Slums, IBA? That is the real question. So let's try to find out what can harness those employability skills on the part of our psychology graduates when it comes to different domains, be it clinical, organizational, forensic, and psychometrics. हम जब ये करियर रेडीनेस प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे हाउ में, मैंने एक और गैप जो आइडेंटिफाई किया वो ये है कि आपकी अब एम्प्लॉयबल प्रोफाइल बीइंग अ साइकोलॉजी ग्रेजुएट कब से बनना शुरू होती है. जिस दिन आप डिग्री लेते हैं और एक सीवी में लिखते हैं कि ओके जी 2021 से 2025 तक की मेरी डिग्री है या 2022 से 26 तक की डिग्री, और नो आई एम अ ग्रेजुएट एंड प्लीज हायर मी. नो, it starts way earlier than that. When you were spending 3 to 4 hours on your Instagramming and Facebook and Snapchat, which I don't mind. I don't want to sound critical here, but what about the time you spend on LinkedIn to establish your network? Because network is net worth. I wish somebody would have told it to you psychology graduates in their academic corridors. Unfortunately, we don't understand visibility and noticeability are the prelude to be employed and deployed at any workplace. And this visibility, the chance of this visibility, अगर सिर्फ कन्फाइंड रखा हुआ है कि जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी जिसमें 250 एप्लीकेशंस गई हुई होंगी, उसमें इंटरव्यू की कॉल, वो एक विजिबिलिटी है ना. इंटरव्यू means that you are being viewed and analyzed in person. And you are waiting for, and then you say, oh, I kept on sending CVs, but I don't get an interview call. So it means already the visibility margin is very limited to be interviewed by a potential employer. Secondly, because you did not spend time on your LinkedIn, you didn't connect to the people who matter, you didn't comment on their posts, you didn't draw their attention by your very meaningful reactions and responses to their comments and their posts and their activities. So एक तो LinkedIn बहुत ज़्यादा underutilized होता है. Secondly, CV and how to send the CV. Would you believe, जो मैंने अभी कहा ना, दर्जनों CV आते हैं, उसमें से 70% सिर्फ CV आया हुआ होता है. Hello, excuse me, you are sending the founding director of House of Wellness a CV and you just forgot to write a couple of lines in form of a cover note that what made you think you should be hired by House of Wellness or by any other place while sending your CV. Nobody told them how to apply. And then when I open up their CV, it's very rudimentary. Their Instagram feeds will be more, eloquent and
categorical and descriptive about their personalities, but their CVs. It's very rudimentary, basic, doesn't draw the attention. And by the way, this is very different when it comes to business graduates of IBA and LUMS and some institutions of that caliber. The CVs are very good. लोग पूछते हैं, अच्छा जी मैं तो फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, क्या डालूँ CV में? You ask, you can make a very impressive CV, even if you have done simple BS, spending 4 years. And okay, what will make it attractive? ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ. What did you do other than studying 130 something credit hours during your 4 years? How many conferences, how many societies, how many seminars, how many symposium, how many trainings? Not only you attended, rather you conducted. You became part of the organizing committees of such events. I want to see your activism. I want to see your personality with confidence, with initiative, with dependability. क्या आपने अपना वो कैंडिडेचर इस्टेब्लिश किया है अपनी सीवी में, अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में? क्योंकि आपका सीवी देखने के बाद मैं आपको शायद सीरियसली कंसीडर करूं तो आपका लिंक्डइन भी देखूंगा, आपकी सोशल मीडिया फीड भी देखूंगा. सो आई नीड टू बीइंग एन एम्प्लॉयर, आई know what I need to see. Being a candidate, being a student or graduate of psychology, you need to spend more time and pay more attention to your networking and beyond academics, profiling of yourself as a potential candidate for a job. क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये अगर हमने पढ़ भी लिया तो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ ली, एजुकेशनल पढ़ ली, टेस्टिंग पढ़ ली, तो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, जाएंगे कहाँ, मतलब करेंगे क्या फिर इस स्पेशलाइजेशन के साथ? मैंने कहा ना कि मैं तो ये सवाल क्लिनिकल पे भी करूँगा. क्लिनिकल करके कहाँ जाएंगे आप? अपना क्लिनिक खोल के बैठेंगे तो आएगा कौन क्लिनिक में? कैसे किसी को पता चलेगा कि इतना अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो वापडा टाउन में या बैरिया टाउन में या DHA में कहीं मौजूद है? बिल्कुल इसी तरह जो बाकी की स्पेशलाइजेशंस हैं उनके एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं. क्लिनिकल का सिर्फ ये होता है कि अपेरेंटली लगता है ये B2C टाइप का काम है ना, बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि मैं बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवरी इंडिविजुअल इज माय क्लाइंट ना, तो वो आसान लगता है और यूँ लगता है कि ओके देयर आर मैनी क्लाइंट्स. आपका एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आपका क्लाइंट है, राइट? यूनिलीवर आपका क्लाइंट है, P&G आपका क्लाइंट है, कोक आपका क्लाइंट है, पेप्सी आपका क्लाइंट है, मोल आपका क्लाइंट है, फौजी फर्टिलाइजर आपका क्लाइंट है, फातिमा फर्टिलाइजर आपका क्लाइंट है. मतलब यू टॉक अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज. इनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, इनको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए, इनको इंटरनल ब्रांडिंग के लिए आप जैसे ग्रेजुएट्स चाहिए. सो वाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ फ्रॉम being noticed and acknowledged by these potential employers as one of the potential candidates, right? So there are job opportunities for anybody who is relevant and appealing to the expectations and job descriptions of that particular job, right? So a psychology graduate can be an HR executive at any company, can be part of corporate communication, can pitch the idea of being staff counselor, staff stress counselor, occupational health counselor. So you need to create certain job opportunities for you, number one, and then existing job opportunities को tap करने के लिए you just need to be visible, and you have to compete with MBAs, with other social sciences graduates, with MPAs, Masters Public Administration. They are actually, उनको देखें कि वो कहाँ से जाके jobs और किन किन जगहों पे jobs ले रहे होते हैं. Why not in consumer research? You have studied consumer behavior in the domain of research. Why not in advertising? What is advertising? I mean, is it only the marketing, MBA marketing is going to be in advertising and promotion and PR companies? You are the graduate or undergrad who has studied human psychology,
wherever this knowledge of human psychology is being used to sell any product or service, you are a candidate for that organization. Having this entire discussion in the backdrop, at House of Wellness, we designed this career readiness program. It is an intensive course whereby we will train graduates and about to be graduates of psychology to understand their personalities better, to identify their employability potentials, to know the tactics and strategies both. ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. अच्छा CV इज़ अ टैक्टिक. उस CV को कैसे किसी पोटेंशियल एम्प्लॉयर से कंसीडर करवाना है और इंटरव्यू के दौरान कैसे एक इम्प्रेसिव शो डाउन और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इंश्योर करनी है आपने. इट इज़ स्ट्रेटेजिक बाय नेचर. तो ये टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? आपका लिंक्डइन, आपका CV, आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे करवानी है किसी प्रोफेशनल, सीनियर प्रोफेशनल से लिंक्डइन पे, इन मामूली छोटी अपेरेंटली माइन्यूट डिटेल्स से लेके जनरली क्या डोमेन्स हैं साइकोलॉजी की, मास्टर्स लेवल पर आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, एम्प्लॉयर्स कौन से हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या हैं पाकिस्तान में जहां एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, नॉट सर्टेन डिपार्टमेंट्स, वेरिंग डिपार्टमेंट्स में अपनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र कर सकता है, कंसीडर करवा सकता है अपनी एम्प्लॉयमेंट. इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने इकट्ठा करके साइकोलॉजी करियर्स रेडीनेस प्रोग्राम डिज़ाइन किया है. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रोल आउट इट्स फर्स्ट बैच.